Hey guys, good morning and welcome you all in our next video for class 10th science chapter 2. The name of chapter is acid, base and salt. Today we are going to discuss about salts. In our previous video we have already learned about acid, their preparation and properties, base and their properties, and in last video we have already learned about the pH and their importance. Today we are going to discuss about salt. What is salt and how salts are classified, how salts are prepared, what is the properties of salts. So without wasting much of our time, I'm here to start with the salt. To begin with the salt. What is salt? Salts are ionic compound containing a positive ion other than H plus ion, hydrogen ion, and a negative ion other than hydroxide ion, OH minus ion. Acid react with base to form salt. Acid reacts with base to form acid react with base to form salt. And this reaction is called neutralization reaction. To understand it, here the example are HCl aqueous is acid when it's combined with NaOH aqueous. Base we have NaCl aqueous plus H2O liquid. This is salt and this one is water. So guys, when acid and base react together, it forms salt and water. What we get after the reaction of acid and base? The salt, and along with some water. A salt form by complete or partial replacement of the hydrogen of an acid or hydrogen of an acid by metal or an electropositive radicals. What is radicals? The ionic part of the salt. There are two types of radical. A salt contains two types of radical: acid radical or basic radical. If negative charge there, it means acid radical, and if the charge species bearing positive charge means basic radical. Again, we can write some example. For example, H2SO4 is an acid when treated with NaOH aqueous
NaHSO4 aqueous plus H2O. This is the salt and partial replacement of hydrogen. In this case, partial replacement of hydrogen. This is the partial replacement of H atom. Because in H2SO4 there is two hydrogen atom, only one hydrogen atom get replaced by one sodium atom, and we have this. And again, if H2SO4 combined with 2 NaOH, more amount of base, excess of base, it forms Na2SO4 aqueous plus 2 molecule of water. This is the complete replacement of hydrogen. So this is the main thing which we know about the salts. I think you guys have some basic idea about the salt, what is salt and how they behaves or interface. Now let's move up or move on to the next section, classification of salt. Classification of salt. How salts are classified? The question is come or arises in each and every one mind. So on the basis of classification or on the basis of nature, salts can be classified into following categories, and the category is normal salt, acidic salt, basic salt, double salt, mixed salt and complex salt. Classification of salt. Classification of salts. Salts classified into normal salt. First one is normal salts, acidic salts, basic salt, double salts, mixed salts, and last one is complex salts. So here first I am going to explain the normal salt. Complete replacement of hydrogen by an acid. Normal salt, complete replacement of hydrogen of an acid by a basic radical, by a basic radicals. For example, KOH aqueous on treatment with HCl aqueous
we have KCl aqueous plus H2O liquid. This is the example of normal salt, because one H plus of acid completely transferred by potassium atom, and from this one is the salt. So some other example of salt: KCl, NaNO3, BaSO4, Na3PO4, etc. These are the example of normal salts. The next one is acidic salts. When partial displacement of hydrogen of an acid, partial replacement of hydrogen of an acid. For example, NaHCO3, NaHSO4, NaH2PO4, KHSO4, etc. This can also be explained by giving example. For example, reaction is H2SO4 plus NaOH give NaHSO4 plus H2O. This is the partial or the partial displacement of H plus ion of from an acid, right? The next one is basic salt, produced by incomplete neutralization of base. Produced by incomplete neutralization of a base. For example, MgOHCl, BiOCl, SbOCl, CuCO3.Cu OH whole twice, etc. These are the example of basic salts. Reaction is zinc hydroxide, ZnOH whole twice. When treatment with HCl, it forms ZnOHCl plus water. This is what we are talking about, is a basic salt. Now come to the double salt. Combination of or union of two सिंपल सॉल्ट्स क्या कहलाता है आपका कि डबल सॉल्ट्स. जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा है पोटास एलम जो होता है, फिटकरी जिसको बोलते हैं, क्रोम एलम होता है. तो ये सब जो है
आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं किसके, डबल सॉल्ट के नॉर्मल कंडीशन में। जैसे एग्जाम्पल में पोटास एलम। पोटास एलम क्या होता है, फिटकरी। K2SO4 या K4SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये है हमारे जो सॉल्ट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। नॉर्मल वे में अगर हम इसकी बात करें तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये क्या आपका पोटास एलम है। इसके बाद जैसे है क्रोम एलम। क्रोम एलम CHROME, क्रोम एलम ALUM, क्रोम एलम। क्रोम एलम क्या है, K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2। तो ये जो है आपके डबल सॉल्ट है। इसके बाद आता है मिक्स्ड सॉल्ट। इसमें मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल होता है। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है, मोर देन वन एसिडिक और बेसिक सॉल्ट। एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स। अब आप सोचेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैसे एग्जाम्पल में अभी यहां लिख रहा हूं, इसको लर्न करना है आपको ताकि आगे आपका काम में आ जाए। इसको आप लिख सकते हैं NaKSO4। मैंने यहाँ ऐसे खोल के इसको सोडियम पोटेशियम सल्फेट लिखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NaKSO4 ये है। इसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखने की कोशिश की थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोरेट है एग्जाम्पल में, जैसे CaOCl2 या CaClOCl, ये है हमारा, है ना। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। इसके बाद है हमारा लास्ट वन कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट जो होता है ये डबल सोल्ट के तरह ही होता है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना करके एक एग्जाम्पल आपको नॉर्मल दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है आपका कॉम्प्लेक्स सोल्ट है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जैसे इसमें एग्जाम्पल से ही समझते हैं, लाइक डबल सोल्ट बट कॉम्प्लेक्स। सॉल्ट डबल सॉल्ट की तरह होता है, लेकिन क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल K4FeCN होल 6, NaAgCN2, NaAgCN होल ट्वाइस। तो ये जो एग्जाम्पल है आपके, ये किसके हैं, आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के हैं। नॉर्मल एग्जाम्पल है ये आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के। K3FeCN होल 6 एक्सेट्रा। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको ये इंफॉर्मेशन काफी काम के लगे होंगे।